Ignited Minds Tutorials has uploaded a video covering the topic of practical organic chemistry for IIT NEET and CET entrance exams preparation, covering various topics like qualitative deduction and analysis, detection of carbon and hydrogen, nitrogen test using Lassane's extract, detection of sulfur, lead acetate test, sodium nitroprusside test for halogens, test for phosphorus, Dumas method, Geldel's method, etc. तो वेरी गुड इवनिंग। हमारा आईआईटी नीट रिवीजन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिटिकल पार्ट। ओके, एंड दिस टॉपिक यू मे बी हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज हमारे बोर्ड्स के लिए ये सब डिलीटेड था। ओके, कौन सा एनालिटिकल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी सब कुछ था लेकिन वो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, थोड़ा थोड़ा तो किया होगा प्रैक्टिकल्स में, बट थियरी में बोर्ड एग्जाम्स में ये सब डिलीटेड था। तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज की टॉपिक है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिटिकल पार्ट्स। ओके, so let's see. In this lesson we will be studying how to analytically find out an organic compound, then how to qualitatively detect an organic compound as well as quantitatively detect its percentage, qualitative as well as quantitative aspects. Then how to analyze different elements like carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogen. Different elements present in an organic compound, how we can find out them. Okay, such things we will be studying in this lesson. So here you know that organic compounds are hydrocarbons. They contain carbon and hydrogen basically. Apart from carbon and hydrogen, they also contain several functional groups. Say some example of functional group. Carboxylic acid, alcohol, aldehyde, ketone. हाँ, 12th स्टैंडर्ड की पूरा चैप्टर अभी बोल देंगे, पूछा तो ठीक है, चलेगा। हाँ, so ester, ether, anhydride. Yes. So you know that there are different functional groups. If you consider this functional group, we can say that there are other elements also. Apart from carbon and hydrogen, there is oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens. Lot of elements are there in an organic compound. Suppose imagine that I am giving you an organic compound in a test tube, and I am telling you to find out which all elements are present in this compound. And if you are saying, sir, there is carbon and hydrogen, and then I am asking or I am giving you the second task, then you quantitatively tell me the percentage of carbon or percentage of hydrogen or percentage of oxygen present in that compound. So these are the two different aspects of analytical organic chemistry. They are qualitative analysis as well as quantitative analysis. So listen, qualitative means you are simply able to find out which all elements are there. You are simply confirming the presence of the elements in qualitative analysis. While in quantitative analysis, you are measuring the percentage or the mass of that particular compound or element in the organic compound. Understood? Qualitative aspect means you are only saying whether it is present or absent. Okay. The same you done with salt analysis also. In salt analysis, we'll do what? पहले हम qualitative test करता है, कौन सा cation है, कौन सा anion है, and quantitative तो नहीं है उसका. You only have to identify the cation and anion, and you will say the name of the salt, right? That was qualitative analysis. Understood? Because you are only saying the presence or absence of an element. When you come to quantitative analysis, you have to take its weight, measurement, how much percentage it is present in that organic compound. For that purpose, you have to use some different techniques, you have to learn some formula, you have to find out different masses, weight, and you have to do a lot of calculation, and you will get the final answer. Okay. So in this session, we only deal with qualitative analysis, and if the time permits, then we will check out few quantitative analysis. पूरा नहीं कर सकते आज की दिन में.
So let's go in detail with the qualitative analysis. Everyone understood what we are going to learn? You have got an idea, right? Qualitative and quantitative. Okay. So the first element we are going to detect is carbon and hydrogen. I told you organic compounds are basically hydrocarbons. Okay. So to detect carbon and hydrogen, we will be performing Liebig's method. Which method? Liebig's method. You can read this method. The method for the detection of carbon and hydrogen is also known as Liebig method. And what we are doing in Liebig method? We will be heating that particular organic compound with a CuO, cupric oxide. What we'll do? We'll take that particular compound in an ignition tube, the compound which I am going to give you. Then you will add which compound? Cupric oxide. Then if carbon is present in it, you are going to heat it, right? If there is carbon in the compound, then क्या होगा? कार्बन कुप्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके हीटिंग के बाद क्या बन जाएगा? कॉपर प्लस CO2. So if CO2 gas is evolving, confirm है क्या? कार्बन की presence. So carbon की presence is indicated by which evolution of which gas? Carbon dioxide gas. And if hydrogen, the Liebig method is also using to identify the presence of hydrogen also. अगर hydrogen है तो क्या मिलेगा? H2O will be obtaining. H2O this one. So hydrogen plus cupric oxide will give you copper plus H2O. Yes, so you can see it is a basic redox reaction. Cupric oxide, it is having oxygen with them. So that oxygen it is liberating and it is reducing to form copper. Okay. So what all things you understood from Liebig's method? What we are doing this exactly? Here we are heating a particular organic compound with cupric oxide CuO. After the heating, if it is giving CO2, carbon is present. If it is giving H2O, then hydrogen is also present. Both of them can be given because carbon and hydrogen together they can be present in a compound. Yes. So here you can see how to detect carbon dioxide. It is a gas. Can you see carbon dioxide is there in the atmosphere? But can you see this? No. कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कैसे समझेगा कि हाँ ये फॉर्म किया है कार्बन डाइऑक्साइड? स्मेल से भी पहचान नहीं कर सकते. ओके, तो क्या करेंगे? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो हाइड्रोजन है. तो yes, lime water test. You know that there is liquid lime. Calcium hydroxide, CaOH twice. This CaOH twice is not that much pure white. Okay, so but it is having a light white color. Okay, that is not so pure white in color. But after passing carbon dioxide, this calcium hydroxide will turn into a milky white color. मिल्की वाइट कितना होती है उतना वाइट कलर में बदल जाएंगे CaOH twice. So initially it is not having that milky white color, but after passing carbon dioxide it will form a milky white color. So observing that color change, you can say that carbon dioxide is formed in the dust. Understood? Imagine that if more and more carbon dioxide is excess of carbon dioxide is formed. If excess of carbon dioxide is formed, then what happen? You know why that milky white precipitate is formed? Because of calcium carbonate. You can see the reaction. Carbon dioxide combining with calcium hydroxide will form you calcium carbonate, CaCO3. But in the excess carbon dioxide means CaCO3 is undergoing reaction with more and more CO2. What happen? It will give you CaHCO3. Calcium bicarbonate. This calcium bicarbonate is colorless, so that milky white color will disappear in the presence of excess carbon dioxide. So you understood the complete fate of calcium carbonate. What happens? If carbon dioxide is passing through the calcium hydroxide, it will turn milky white in color due to the presence of calcium carbonate. If excess carbon dioxide is present, that will turn into colorless. Why? Because calcium hydrogen carbonate means calcium bicarbonate is forming.
that is not having a white color. It is colorless. Understood how to test carbon. Now who is remaining? Hydrogen. H2O मिला या नहीं मिला वो हमें कैसे पता चल जाएगा? उसके लिए भी केमिकली क्या होना चाहिए? कुछ एविडेंस होना चाहिए that we should see with our science is everything we should feel, we should see with our eyes, है ना? So कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसमें से वाटर बाहर आया है? मैंने जो कॉम्पाउंड तुम्हारे हाथ में दिया है उसमें हाइड्रोजन है तो कुप्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके वाटर मिलेगा। ये वाटर बनाया या नहीं बनाया कैसे पता चल जाएगा? चलो देखते हैं। You know the difference between anhydrous salt and hydrated salt? What is the difference between anhydrous salt and hydrated salt? Without water, anhydrous, मतलब नहीं, anhydrous. Hydrated salt में water रहता है, ठीक है, देखो. So copper sulfate is having what color? Nandini, copper sulfate की color क्या है? ब्लू कलर होता है if it is hydrated. अगर अनहाइड्रस है तो white होता है. So I should make an arrangement in the system so that I should provide some anhydrous copper sulfate. If water vapor is passing through this anhydrous copper sulfate, of course this copper sulfate will absorb that water and turn into hydrated copper sulfate, CuSO4 H2O. So this is copper to sulfate pentahydrate. What is its color? Blue color. It is commonly called as blue vitriol. Okay. जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट से समझा, इसी तरह वाटर की प्रेजेंस कौन सी कलरेशन से समझेगा? दिव्या, ब्लू कलर से. How? It turns anhydrous copper sulfate into hydrated copper sulfate, which is blue in color. Done? Liebig's method is well understood. Any doubt? Okay, so here is an illustration for this reaction, only this. Okay, but water vapor wala part. So here you can see an organic compound is burning with the, we have to burn it with which one? Cupric oxide. That is Liebig test. Okay, so burner is here. You can see the test tube and you should burn it like only the bottom part. Bottom part means one of the sides in the bottom part is facing the flame. Okay, and अगर ये लाभ में कर रहा है तो क्या करना है? किसी के चेहरे के ऊपर ऐसे रख के करना है? नहीं. You have to take all the precautions. Okay, so ऐसा एक अरेंजमेंट देख लो. इसमें एक रबर स्टॉपर तुम्हें देख सकते हो, उसके अंदर से और एक ट्यूब जा रही है. वो ट्यूब में क्या है? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रखा है, which is white in color. And you know that इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाएगा, वाटर भी बन जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसे जाके हम लाइम वाटर में कौन सा CaOH में इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो इसका कलर किसमें बदल जाएगा? व्हाइट, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा. तो कार्बन इज प्रेजेंट, कंफर्म. एंड अगर वाटर वेपर आया है तो वो भी आ जाएगा इधर तक. इधर कौन है? इसको इंतजार करके कौन बैठा है? कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस. तो इससे मिलने के बाद कौन सा कलर में बदल जाएंगे वो? ब्लू कलर में बदल जाएंगे. दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. You can see that. Understood the illustration? So carbon and hydrogen be qualitatively identified. Now अभी देख लेंगे कौन सा अदर एलिमेंट्स डिटेक्ट करना है. अदर एलिमेंट्स में कौन कौन है? इधर नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन, फॉस्फोरस. 4 एलिमेंट्स वी आर गोइंग. हालोजेंस में और भी है ना. You have to identify chlorine, bromine, iodine. Fluorine detection is not there. Chlorine, bromine, iodine we have to study in halogen. So to identify nitrogen, sulfur, halogen, we have to perform a test called the Lassinus test. Anybody did this test, or do you have any idea or knowledge about Lassinus test? No. Okay, I'll say. So in order to identify these much elements, you have to make a common mixture or a solution. You have to make some reaction mixture. Understood?
And from that reaction mixture, you have to take little aliquot. Aliquot means a few portion from a large volume. Okay. So first of all, you have to make a stock solution. Okay. So we can say that Lassigne's test that is performed in sodium fusion tube. सोडियम फ्यूशन ट्यूब ग्लास से बनाया हुआ इतना छोटा एक ट्यूब होते हैं, इसको इग्निशन ट्यूब भी बोलते हैं. आई विल शो यू. हाँ, ऐसे दिखता है. ओके, एंड इट इज नॉट सो टफ. It will break quickly. Will break or it will heat up quickly. Understood the texture? Can you imagine? Sodium fusion tube, transparent, made up of glass. It is easy. We can heat it easily as well as it will be burst also. Okay. So here you can see, with the help of a burner, we are heating dry sodium pellet. Sodium, you know, is it highly reactive or less reactive? सोडियम हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है पलक? हाईली रिएक्टिव है. ओके, अगर पानी में डाला तो ब्लास्ट होगा. ओके, यस, यू नो दैट सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी हाई रिएक्टिव. सो लैब में वो किस में डाल के रखता है नॉर्मली? वेरी गुड आदित्य, केरोसिन. यस. So anyway, dry sodium pellet we have to take. We can cut sodium with the help of a knife. It is very soft metal also. So you have to take a little bit of sodium and add into this ignition tube or sodium fusion tube. And what you have to do, with the help of this burner, you have to heat it up. So what happened? This will quickly get melted. Sodium start melting. Okay, and just after it's melting, you have to add organic compound which I am going to give you. The organic compound जिसमें तुमको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हालोजन और सल्फर का प्रेजेंस डिटेक्ट करना है, वो कंपाउंड थोड़ा सा इसके अंदर डालना पड़ेगा. डाला, सेकंड स्टेप समझा? डाला. ओके, ये डालने के बाद देखो इसका कलर और तुम गर्म कर रहा है, तो अभी ओवरहीट हो रहा है तुम्हारा इग्निशन ट्यूब में. बोला इग्निशन ट्यूब की टेक्सचर कैसा है, तो जल्दी वो हीट अप होके एकदम लाल कलर में आ जाएगा, रेड हॉट होगा. ओके, तभी साइड बाय साइड तुम क्या करना चाहिए, एक चाइना डिश में, चाइना डिश पता है, इतना सा एक बाउल होता है. हाँ, यस, इन a China dish you have to pour some distilled water. Okay, you have to keep it ready by this time. Okay, simultaneously you have to do everything. So just after the moment it is getting this much red hot, you have to plunge this into that China dish which contain distilled water. तो क्या होगा, इतना गर्म ट्यूब तुम पानी में डाल रहा है, so some sound effects will be produced and ultimately this is going to break and release the contents into the water itself. Okay, so you can avoid, in this paragraph it is said that you can avoid this bursting by carefully placing a wire gauze. Wire gauze, you have seen wire gauze, you sometimes while burning in a over a stand we used to keep a wire gauze like this. ऐसा एक वायर गोस स्टैंड के ऊपर रख के गर्म करता है ना, वो वायर गोस वो चाइना डिश के ऊपर रखो ताकि वो बर्स्ट होके बाहर नहीं आ जाए. एनीवे, अभी क्या हुआ, तुम्हारा चाइना डिश में क्या है, पानी है, उसमें क्या है, रिएक्ट किया हुआ सोडियम के साथ रिएक्ट किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो गर्म करके अभी पानी में डाला. इतना समझा? अभी क्या करना, वो ग्लास ट्यूब्स उसमें से निकालना है ना, ग्लास ट्यूब्स पूरा अभी वो बर्स्ट होके तुम्हारा चाइना डिश में अभी पूरा ब्लैक कलर में ऐसे क्या इम्प्योर सब्सटेंसेस है, तो यू हैव टू फिल्टर इट आउट. ओके, उसके लिए क्या करना, एक बीकर लेना पहले, उसके ऊपर फनल रखना, फिर फनल के ऊपर क्या रखना, फिल्टर पेपर. पता है ना कैसे रखना है, कॉर्न शेप में रखना है. बीच you have to keep it in the shape of the funnel itself. funnel की शेप क्या है, कोनिकल है ना. कोनिकल शेप में फिल्टर पेपर अरेंज करके रखना है. फिर क्या करना, तुम्हारा ये सोडियम फ्यूजन ट्यूब, मतलब ये जो चाइना डिश जिसमें सोडियम फ्यूजन ट्यूब पूरा बर्स्ट हो चुका है, वो सीधे
ये फनल के अंदर से pour करना। तो फिल्टर होके नीचे नीचे क्या रखा है, बीकर रखा, बीकर के अंदर गिर जाएगा एक एक्सट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। So you understood how sodium fusion extract is preparing. So in order to detect nitrogen, sulfur, phosphorus, halogen, you have to make an extract called the sodium fusion extract. This sodium fusion extract is prepared by the process which I explained now. Can you explain one by one the steps I mentioned? Okay, Aditya Bhagat, what was the first thing? पहले मैंने क्या लिया, कौन सा ट्यूब लिया? टेस्ट ट्यूब नहीं, सोडियम फ्यूजन ट्यूब यानी इग्निशन ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो थोड़ा और हार्ड है ना, मैं बोला ओके ठीक है। सो इग्निशन ट्यूब लिया, उसमें सोडियम डाला, फिर क्या किया भोसले? उसमें मैंने सोडियम को मेल्ट किया, मेल्ट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से लिया? मैंने दिया, यस। फिर क्या किया? और गर्म किया, है ना दिव्या? और गर्म करके कौन सा कलर तक लेके आया? रेड हॉट आयन ट्यूब आया, रेड हॉट आयन ट्यूब में रेड हॉट ट्यूब आया। फिर उसके बाद उसको प्लंज किया किसमें? टॉप वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में। यस, डिस्टिल्ड वाटर कौन सा बर्तन में लेना है? चाइना डिश में लेना चाहिए। फिर क्या होगा? वो पूरा बर्स्ट होगा, उसका कंटेंट्स रिलीज करेंगे। अभी उसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज इम्प्योर, इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है। जो बर्स्ट किया हुआ ग्लास के टुकड़े है वो सब उसके अंदर है ना। सो यू हैव टू फिल्टर इट विद द हेल्प ऑफ ए फर्नल एंड फिल्टर पेपर केप्ट इन। फिल्टर होके नीचे गिर जाएगा, जो उसको बोल सकते हैं हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया ना, समझा अच्छे से? अभी देख लो, हमें अभी कौन सा टेस्ट पढ़ रहा है? लासाइन्स टेस्ट। लासाइन्स टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई विच ऑल कंपाउंड्स, नंदिनी? कार्बन, हाइड्रोजन, थैंक यू, नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन, phosphorus. Okay. The entire process is summarized here. Hope you this is the same with what you visualized in your mind, right? Yes, very good. Now, what happens in it chemically? देखो, अगर compound में कार्बन होगा ना, कार्बन is already present in the organic compound that we proved. Then नाइट्रोजन है तो, नाइट्रोजन है तो सोडियम फ्यूजन ट्यूब में सोडियम रहेगा ना। पहले कौन सा इंग्रेडिएंट लिया तुमने? सोडियम ही लिया ना। तो सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन मिलके क्या बनेगा? NaCN will be sodium cyanide will be formed. Okay, so reaction number 1 you understood. अगर सल्फर है तो, ओनली सल्फर है तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड विल बी प्रोड्यूस्ड, Na2S। देन इसके बाद अगर बस हालोजन ही है तो Na plus X will form NaCl, NaBr, NaI, commonly we can say NaX. Understood? So 3 reaction. फॉस्फोरस का अभी मत बोल रहा हूं, बाद में बताएंगे। पहले हम नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन का देख लेंगे। अगर नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड, अगर सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड, अगर हालोजन है तो सोडियम हालाइड। ना बनाया? ठीक है। नाउ अगर ये तीनों दोनों प्रेजेंट है, कौन कौन? सल्फर और नाइट्रोजन, कार्बन और सोडियम ऑलरेडी है। ओके, अगर ये दोनों फर्स्ट रिएक्शन में और सेकंड रिएक्शन में तुमने जो बनाया है वो दोनों प्रेजेंट है, तो इफ नाइट्रोजन एज वेल एज सल्फर both of them are present, what happen? The compound formed will be sodium NaSCN. What? How will you say this? Sodium thio, yes, thio cyanate. So NaSCN will be produced. So you understood? If nitrogen is only present, what will be formed? If sulfur is only present, what will be formed? If halogen is only present, what will be formed? And if nitrogen and sulfur together present, what will be formed? Understood? Well clear? Yes. Now this sodium fusion extract और लासाइन्स एक्सट्रैक्ट की अलिकोट निकालेंगे। अलिकोट मैंने बोला क्या करना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब में तुम क्या करना, ऐसे 2 ml 2 ml 2 ml you have to separate it. Okay, so few portion from that big china dish you are going, no, now this is in the beaker, right? Extract किया है, हाँ,
बीकर से थोड़ा थोड़ा ml तुमने अलिकोट करके किधर रखना है, टेस्ट ट्यूब में रखना है, बिकॉज यू हैव टू डू सेपरेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड बाद में फास्फोरस भी आ जाएंगे, सब है सब। तो देखो टेस्ट फॉर पहले क्या है, नाइट्रोजन लिखना है, यस यस you can write this. If you want you can copy it down. हो गया, so fast. तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना, पढ़ो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ नाइट्रोजन इज हीटेड विद freshly prepared iron sulfate and then it is acidified with concentrated sulfuric acid. इधर मैंने दो रिएजेंट्स बताया, क्या क्या, आयरन सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब 2 साल पहले जो बना के रखा है, नहीं नया नया अभी बना के रखा है, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट लेना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ना। इसमें देखो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+ है, समझा, तुम्हें ऐसे महीनों पहले बना के रखा हुआ यूज किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल चुका होगा, ठीक है। हाँ, तो आयरन सल्फेट उसके साथ पहले ट्रीट करना, मतलब थोड़ा सा फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट क्या करना है, अभी तुमने जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया है उसमें डालना, ओके। अभी मैं एक सवाल पूछ लूं, मैंने जो दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किधर है अभी, बीकर में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में वो है ना, हाँ, तो अभी बाहर से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसके अंदर पूरा ले लोगे चाइना बीकर की पूरा अंदर उसमें ये डालोगे नहीं, तुम्हें आगे भी क्या करना है, हाँ, सल्फर का और हाइड्रोजन का टेस्ट करना है, उसके लिए पहले से फिर स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक इट इन डिफरेंट पोर्शंस एंड यू हैव टू ऐड व्हाट, आयरन सल्फेट, देन आफ्टर दैट यू हैव टू एसिडिफाई इट, एसिडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो अभी देख लो इसमें क्या क्या हो रहा है। So if nitrogen is present, what happened in the first reaction in the previous slide? Sodium cyanide will be formed. So this sodium cyanide, उसमें cyanide ions होता है ना, that will react with the iron sulfide to form hexacyanoferrate ion. Hexacyanoferrate ion मतलब क्या है, अगर तुमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आयरन सल्फेट डाला तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल गेट हेक्सासाइनोफेरेट। अभी तुम्हारा टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्म कर रहा है, FeCN6 इसको देख के कुछ चैप्टर याद आ गया, हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा रिएजेंट ऐड करना है उसमें एसिडिफाई करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, ठीक है। तो इधर H+ जो है दैट इज सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो Fe2+ will turn into Fe3+, ओके। सो ऑक्सीडाइज करने के लिए कर रहा है क्या, H2SO4 acidification. Now you can see what happens, FeCN6 जो फर्स्ट रिएक्शन में बनाया है उसमें आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चल जाएगा, हाउ विल यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन दिस कंपाउंड, रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा है, एंड इसके नाम में भी लिखा है, नाम में क्या दिया है, 2 दिया है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+ है, ओके। सो ये FeCN6 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है वो अभी फॉर्म किया हुआ Fe3+ के साथ कंबाइन करता है। तो इधर मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताया, पहले साइनाइड जो है ना, सोडियम साइनाइड, और साइनाइड क्या करते हैं, आयरन सल्फेट की प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, FeCN6 बन जाएगा, फिर Fe2+ आयन्स एसिडिफिकेशन में Fe3+ में बदल जाएगा। अभी ये Fe3+ पहले रिएक्शन की FeCN6 के साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज फेरिफेरोसाइनाइड, फेरिफेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला देख लो, Fe4 है काउंटर आयन के रूप में, काउंटर आयन मे बी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ओनली, 11th स्टैंडर्ड may not understand, so Fe4 is the counter ion,
something that is outside the square bracket is called a counter ion. Okay, so here you can see water is also there. It is hydrated. So what is the color of this ferric ferrocyanide? Prussian blue color. Prussian blue color, otherwise we can say it is Belgium blue. ऊपर देखो वो blue, नहीं तो ये शर्ट की थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन हो जाता, थोड़ा और ब्राइट है, होली की कलर्स की तरह एकदम ब्राइट ब्लू होता है. एंड वी कैन सी आदित्य की टी शर्ट में वो कलर है. Anyway, Prussian blue coloration will be formed. Understood? Okay. So what does it indicate if Prussian blue coloration is formed? If Prussian blue coloration is formed, it will indicate the presence of nitrogen. तो कैसे पता चल जाएगा? आंख खोल के देखना कि Prussian blue color आ रहा है और कुछ नहीं करना है. देखो अभी तुम्हारे माइंड में विजुअलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका होगा. ओके, क्या है? पहले क्या किया? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें क्या डाल रहा है ऊपर से? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट. ओके, फिर क्या किया? हीटिंग किया और एसिडिफाई भी करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के. ओके, आदित्य लिसन. तो क्या होगा? इधर Fe3+ फॉर्म करेंगे, Fe3+ के साथ FeCN6 कंबाइन करके क्या बन जाएगा? फेरिफेरोसाइनेट फॉर्म होगा. उसकी कलर दिख रहा है Prussian blue color. Then the science test, nitrogen successfully completed. What is remaining? Sulfur, halogen, phosphorus. चलो देखते हैं. इसमें एक चीज देख लो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये Fe की ऑक्सीडेशन नंबर और ये Fe की ऑक्सीडेशन नंबर अलग है. The Fe ion present inside the square bracket are in +2 oxidation state, whereas Fe ions outside the square bracket are in +3 oxidation state. Just for your kind information. और कुछ नहीं, समझा? दो अलग अलग ऑक्सीडेशन, बिकॉज तुम्हें पता है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन हमने इसमें रिएक्ट किया है. फर्स्ट रिएक्शन में जो फॉर्म किया हुआ FeCN6 में Fe2+ है. सेकंड रिएक्शन में फॉर्म किया हुआ Fe3+, हाँ ऑलरेडी है, 3 है. तो दोनों का मिलन हमें ये प्रेशियन ब्लू कलरेशन कंपाउंड में देख सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ डिटेक्शन ऑफ सल्फर, उसके लिए हमें दो मेथड से, देखो एक मेथड नहीं, एक मेथड फेल हो गया तो भी दूसरे मेथड से हमें प्रूव कर सकते हैं हमारी मैंने जो दिया हुआ कंपाउंड में सल्फर है या नहीं. लास्ट बेंच लिसन. तो सल्फर डिटेक्ट करने के लिए वी कैन फॉलो लेड एसिटेट टेस्ट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. पढ़ो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. यस, प्रशियन ब्लू, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अच्छा टर्म्स मिलेगा. देखो, तो लेड एसिटेट टेस्ट क्या होता है? लेड एसिटेट किसी को सॉल्ट के फॉर्म में मिला होगा ना, सॉल्ट एनालिसिस में लेड एसिटेट देखा है ना, क्या है? पलक, लेड एसिटेट तुमको मिला ना? हाँ, यस. हाँ, तो देखो लसाइंस टेस्ट में, यस ऑफ कोर्स. हाँ, तो do you remember the second reaction which is chemically produced while preparing sodium fusion extract? फर्स्ट मेथड में क्या किया? हाँ, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनेट बनाते. सोडियम साइनेट को पूरा इस्तेमाल किया नाइट्रोजन की प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए. अभी सल्फर की प्रेजेंस कंफर्म करना है ना, याद करो, रिकलेक्ट करो, 2-3 स्लाइड पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ा है, सोडियम प्लस कार्बन प्लस सल्फर विल गिव यू सोडियम सल्फाइड, है ना? कार्बन उसने मेंशन नहीं किया है, सोडियम और सल्फर ही है. यस. हाँ, तो Na2S. यस. So lead acetate, what is the formula of lead acetate? Lead Pb acetate, हाँ, CH3CO, CH3COO twice आ जाएगा यहाँ. Okay, because you know acetic acid is CH3COOH. Okay, here 2 CH3COO, that is the anion.
This is the cation. Pb2 plus is the cation. CH3COO minus is the anion in this salt. Acetate is the anion. Lead is the cation. Anyway, lead acetate is there. It's already there in the laboratory. What you have to do? You have to add. First of all, you have to take test tube. Then क्या करना है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो बना के रखा है उसका सेकंड एलिकोट लेना. फर्स्ट एलिकोट क्या किया? नाइट्रोजन के लिए यूज किया. अभी सेकंड दूसरा लेना, उसके अंदर क्या डालना? अभी जो बोला लेड एसिटेट. अभी मेरा सवाल क्या है? नाइट्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या डाला? रिकलेक्ट करो. फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट. इसी तरह इधर लेड एसिटेट डालना है. लेड एसिटेट डाला तो ए ब्लैक कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड विल बी फॉर्म्ड. देखो सल्फर है तो टेस्ट ट्यूब की कलर अभी क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा पीबीएस की वजह से. तो प्रेशियन ब्लू कलर मिला तो नाइट्रोजन कंफर्म. अगर ब्लैक कलरेशन मिल रहा है तो लेड नहीं, लेड की नहीं, सल्फर की. लेड फाइंड आउट नहीं करना है, सल्फर की प्रेजेंस. ओके डन. सो दिस इज द इलस्ट्रेशन. यू कैन सी पहले क्या किया. एकदम अच्छा इलस्ट्रेशन है ना. देखो इलस्ट्रेशन से ही तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट याद कर सकते हैं. टेस्ट ट्यूब में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, उसमें लेड एसिटेट डाला है. It should be lead acetate, this one. Okay, then what happened after few minutes? It will turn into black coloration. That black coloration is due to the presence of PbS. Done. So sulfur is also identified. By which method? Lead acetate test. Yet another method is also there, that is sodium nitroprusside test. Okay. Sodium nitroprusside is another coordination compound. See, formula देखो. Na2 is the counter ion, Na plus is the counter ion, then FeCN5NO. Okay, what is this? Another coordination compound, and its name is sodium nitroprusside. So you have to directly add sodium nitroprusside into the solution, sodium fusion extract. कुछ देर पहले क्या ऐड किया? लेड एसिटेट ऐड किया ना, पलक. तो जैसे तुमने लेड एसिटेट टेस्ट में लेड एसिटेट डाला सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, इसी तरह अनदर टेस्ट ट्यूब में अगेन यू हैव टू टेक सम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एंड ऐड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. ये डालने के बाद कौन सा कलरेशन आ जाएगा? वायलेट कलर आ जाएगा. सो देखो आज की क्लास कितना कलरफुल है. हमने पहले कौन सा रशियन ब्लू कलरेशन, फिर अभी ब्लैक कलरेशन आया, अभी क्या है? वायलेट कलरेशन पे आया. ओके, different dark colors we are getting. तो ये वायलेट कलरेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. समझा? तो सल्फर का दो मेथड्स हमने पढ़ा, एक है लेड एसिटेट मेथड, दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. यस. एस. हाँ, ब्रैकेट के बाद कुछ. Shall we continue? Okay, you're right. So let us summarize. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? Carbon, hydrogen we already detected. By which method? Anybody recollect? Very good. Liebig's method. Okay. And दूसरा Lassigne's test. That is for nitrogen, phosphorus, sulfur, halogen. उसमें पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, फिर उसमें से हम धीरे धीरे वन बाय वन फाइंड आउट कर रहे हैं. नाइट्रोजन का देखा, सल्फर का देखा, अभी क्या है? हालोजन का देख लेंगे. हालोजन में कौन कौन सा हालोजन है मैंने ऑलरेडी बताया. क्लोरीन नहीं फाइंड आउट करना है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अमान, which are the three different halogens we are going to find out? Iodine. So before checking the halogens,
we have to also go through another reaction. This is for identifying if both sulfur and nitrogen is present. Hope you remember one another reaction which we studied 2-3 slides before, which contain both sulfur and nitrogen. At that time, which compound produce sodium thiocyanate NaSCl? याद है ये रिएक्शन? किधर पढ़ा? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की इलस्ट्रेशन की नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा. Shall I go back to that slide? Everyone understood? Yes. So in this reaction, sodium thiocyanate is there, right? So to this reaction, to this sodium fusion extract, again, you have to take another test tube, add some sodium fusion extract. Then what you have to add? You have to add the sodium thiocyanate in the reaction Fe3 plus will give a blood red color due to the formation of FeSCN2 plus. Yes. For this purpose, what you have to do is you have to add some iron containing compound into the sodium fusion extract. Which iron containing compound? FeCl3. Okay. What you have to add? FeCl3. So listen what I told. Here what you are going to identify? The presence of both nitrogen and sulfur in one go itself. No need to do separate test for nitrogen and sulfur. Reagent भी बचेगा, time भी बचेगा, energy भी बचेगा. ये अच्छी बात है ना? Yes. तो इसके लिए क्या करना? पहले टेस्ट ट्यूब लेना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट डालना, उसके अंदर कौन सा FeCl3 डालना. ओके, तुरंत वो कौन सा कलर में बदल जाएंगे? ब्लड रेड कलरेशन में बदल जाएंगे. If you want to create imitate the color of blood in the laboratory, what you should do? Make the sodium fusion extract first, then the organic compound should contain sulfur and nitrogen first, otherwise no use. Okay, you have to make sure that the organic compound which you used for sodium fusion extract should contain nitrogen and sulfur. To another test tube, what you have to do? Take some sodium fusion extract, add some FeCl3, it will quickly convert into blood red coloration. Why this blood red coloration? Because it is of the presence of FeSCN2 plus ion. Okay, इसका नाम क्या है? Thiocyanate Fe3 ion, which is blood red in color. तो क्या क्या रंग आज हमने होली है. यस यस, एकदम होली वाइब से मैच कर रहा है आज की क्लास. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम देखा. कौन कौन सा कलर देखा? Russian blue. Then black coloration for sulfur. Yes. रेड फोर्थ तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का था. सल्फर की दूसरा मेथड क्या था? लेड एसिड टेस्ट के अलावा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. उसमें कौन सा कलर देखा? वायलेट कलर देखा. अभी क्या चल रहा है? बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन है तो ब्लड रेड कलरेशन दिखेगा. अंडरस्टूड? यस. तो लुक एट हियर, सीधे हम हालोजेंस में जा रहा है. यू कैन सी the sodium fusion extract is acidified with the nitric acid. Reagent number 1 क्या है? नाइट्रिक एसिड. क्या करने के लिए जा रहा है? क्या करने के लिए जा रहा है? टेस्ट फॉर हालोजन. उसके लिए पहले कौन सा रिएजेंट है? नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा. then and then it is treated with the silver nitrate. सेकंड रिएजेंट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट होता है. So you only have to depend on two different reagents. One is nitric acid, another one is silver nitrate. The sodium fusion extract is initially acidified so as to decompose any sodium cyanide or sodium sulfide present in it. क्यों ऐसे करते हैं? हमने पहले क्यों एसिड डालते हैं? हालोजन टेस्ट करना चाहिए ना. हालोजन की टेस्ट में सल्फर और नाइट्रोजन की हाथ नहीं आना चाहिए, है ना. सल्फर और नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हमारा इंफॉर्मेशन मतलब इन्फरेंस अभी जो हालोजन की टेस्ट करने के लिए जा रहा है ना वो गलत हो जाएगा.
because this nitrogen and sulfur will interpret our reaction of testing halogen. उसके लिए पहले क्या करना, मारना, किसको रिमूव करना, किसको किसको रिमूव करना है, नाइट्रोजन एंड सल्फर को रिमूव करना चाहिए. यस, उसके लिए कर रहा है acidification. Hope you understood the role of acidification. You remove nitrogen and sulfur so that it will not interpret our test to distinguish, test to identify which one, halogens. देखो पहले हालोजन है तो क्या होता है. You know that, hope you remember one another equation that we studied just after sodium fusion extract. What was that? Na plus X2 will give you 2NaX. You know, NaCl can be formed, NaBr can be formed, and NaI can be formed. Okay. So in your sodium fusion extract, what is now there? There can be sodium chloride, sodium bromide, or sodium iodide. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम क्लोराइड फॉर्म किया होगा. ये सोडियम क्लोराइड अभी एसिडिफिकेशन के बाद, एसिडिफिकेशन और हालोजन के बीच में कुछ रिश्ता नहीं है, वो क्या क्यों है वो ऑलरेडी मैंने बताया, टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर. So what we are doing now is we are simply adding the silver nitrate solution. Arman, what is the formula of silver nitrate? Silver nitrate, AgNO3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल AgNO3 डाला. ओके, AgNO3 डालने के बाद अभी Cl किसके पास है, सोडियम के पास है. सिल्वर, सोडियम किधर, सिल्वर किधर, सोडियम से क्या है, महंगाई हो गया सिल्वर अभी, तो सिल्वर के पास जाएंगे कौन, हालोजन. तो क्या बनेगा तुम्हें, तो मिलेगा तुम्हें AgCl. ओके, this is a white precipitate. AgCl is a white precipitate. So this white precipitate we can further dissolve in NH4OH. We have to add now ammonium hydroxide. तो पहले क्या करना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या डालना, सिल्वर HNO3 डालना, फिर सिल्वर नाइट्रेट डालना, तो क्या बन जाएगा AgCl. AgCl की प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए NH4OH डालना, डिसॉल्व हो जाएगा. समझा? Yes. Now I'm underlining this statement. Why? Because AgCl is dissolved in NH4OH. That indicates the presence of chlorine. First halogen detected. Now coming to another halogen, bromine. If bromine is present in the organic compound, in our sodium fusion extract, NaBr will be formed, right? जैसे ऊपर NaCl मैंने देखा, हमने देखा. तो NaBr AgNO3 की प्रेजेंस में सिल्वर नाइट्रेट इधर भी डाल रहा है, तो क्या करेंगे, सेम Ag के साथ Br जाएंगे, NO3 will come to Na, तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. समझा? तो इसकी वजह से AgBr फॉर्म किया है. वो कौन सा कलर है, येलो कलर है. व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, आदित्य भोसले एंड आदित्य भगत, लिसन, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा क्लोरीन है तो, येलो कलर्ड, पेल येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा अगर ब्रोमीन है तो. हाँ, अभी नीचे देखो आयोडीन में भी येलो प्रेसिपिटेट ही मिल रहा है. इन द सेम प्रोसीजर यू आर एडिंग AgNO3. ओके, तो ये दोनों को कैसे डिटेक्ट करेंगे, पेल येलो और येलो में ज्यादा फर्क नहीं, तो आंखों से उतना एक्सपर्ट नहीं है हम लोग क्या ऐसे डिटेक्ट करने के लिए. उसके लिए क्या करना है कि NH4OH में sparingly soluble होगा. What do you mean by sparingly soluble? A little bit soluble. You studied solubility in 11th standard, equilibrium. Okay. So if it is sparingly soluble, pale yellow precipitate, that is the presence of bromine. And if it is insoluble, कब insoluble होता है, NH4OH डाला है तो. If it is insoluble yellow precipitate, that indicates the presence of iodine. तो हालोजन की कलर व्हाइट होगा, यानी पेल येलो होगा, येलो होगा. NH4OH डाला तो व्हाइट, मतलब हालोजन है तो, क्लोरीन है तो कंप्लीटली सोलुबल, Br है तो स्लाइटली सोलुबल.
आयोडीन है तो इनसोलुबल, मतलब NH4OH ऐड करने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो लास्ट वन का इन्फ्रेंस क्या था? AgIs insoluble in ammonium hydroxide. Trust everything I already explained. So listen. AgCl is soluble. हाँ, yes. Otherwise it should be sparingly or insoluble बोल सकते हैं, but it is not sparingly, not insoluble. It is completely soluble. Now here, AgNO3 or NH4OH. These are the two steps in detecting halogen. तो पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना, क्या लेना? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना। उसमें क्या डाला? AgNO3 डाला। तो अगर उसमें हालोजन है तो, हालोजन क्लोरीन है तो AgCl बन जाएगा, हालोजन ब्रोमीन है तो AgBr बन जाएगा, हालोजन आयोडीन है तो, लेकिन इधर पेल येलो कलर होना चाहिए, पेल येलो ही थोड़ा सा व्हाइट कलर आ गया, बट आई कैन सी दैट पेल येलो फ्रॉम हियर। कैन यू सी दिस पेल येलो कलर? ये व्हाइट और ये व्हाइट सेम नहीं लग रहा है ना? यस, दिस इज पेल येलो कलर, ऑफ व्हाइट। पेल येलो कलर में अगर NH4OH डाला तो स्पेरिंगली सोल्युबल, देन अगर येलो कलर्ड AgI में डाला तो insoluble. Hope you clearly understood how to distinguish chlorine, bromine, iodine. So what all things we studied? Carbon, hydrogen by Liebig's test. Lassigne's test use करके नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन। अभी कौन बाकी है? फॉस्फोरस। चलो देखते हैं टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। विघ्नेश, ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। ओके, सोडियम पेरोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला कनिष्का? सोडियम पेरोक्साइड, आवाज नहीं आ रही तन्वी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मूला क्या है? H2O2। तो सोडियम पेरोक्साइड की क्या होगा? Na2O2। हाँ, तो सोडियम पेरोक्साइड डाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करना है। फॉस्फोरस के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू हीट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद द, no need of sodium fusion extract. You can directly take the organic compound and heat it with the sodium peroxide. So sodium fusion extract की जरूरत इधर नहीं है। Now the phosphorus present in the compound is oxidized into phosphate। PO4 3 माइनस में बदल जाएगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है तो। Then the solution is boiled with the nitric acid and then treated with the ammonium molybdate. Listen, Na3PO4. Okay, this is the compound we obtained after heating with the sodium peroxide. उसको क्या डालना है? सेकंड रिएजेंट क्या है? HNO3। तो क्या मिला? H3PO4 and NaNO3. Then in the final step you have to treat it with the ammonium molybdate. You know this is the formula of ammonium molybdate, NH4 twice MoO4। तो अमोनियम मोलिब्डेट भी डाला है तो what will be the product? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। फॉर्मूला पढ़ो नंदिनी। what is the formula of ammonium phosphomolybdate? NH4 thrice PO4 12 molybdenum MoO3। yes, so what is its color? येलो कलर। कुछ देर पहले हालोजन में कौन सा, किसको येलो कलर देखा? आयोडीन। ओके, तो देखो फॉस्फोरस डिटेक्ट करना बहुत इजी है। पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करना, सोडियम फॉस्फेट बदल जाएगा, मिल जाएगा। सोडियम फॉस्फेट को थोड़ा एसिडिफाई करना, पहले क्या किया? गर्म, फिर क्या किया? एसिड डाला, फिर क्या किया? अमोनियम मोलिब्डेट डाला, फाइनली क्या मिलेगा? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट विच इज येलो इन कलर। तो इससे हमें फॉस्फोरस
टेस्ट कर सकते हैं. अगर फॉस्फोरस है तो येलो कलर आता है. डन. So look at a question based on Lassigne's test. Mayurish, read the question. Without looking at the board, can anyone say the answer? Because we already explained why HNO3 is needed. Before testing halogen, halogen test करने के पहले हमने सोडियम और सल्फर को रिमूव करना चाहिए. उसके लिए क्या किया? एसिडिफाई किया. कौन सा एसिड से किया? HNO3. पलक, why we have to acidify just before testing halogens? You are not listening. A little bit disturbed. Listen carefully. तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में HNO3 डालना है हालोजन टेस्ट करने के पहले, क्योंकि हालोजन की टेस्ट में बस हालोजन ही होना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की हाथ नहीं आना चाहिए. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? It decomposes Na2S and NaCN if formed. Okay. So what will be the coloration of Na2S in the lead acetate test? Black color, right? Right. Another question based on Lassigne's test. Vaishnavi, padho ye question. Okay. So the question is, nitrogen detection in an organic compound is carried out by Lassigne's test. कभी भी भूल नहीं जाएगा ना वो story, how to make sodium fusion extract. That particular test is called the Lassigne's test. Okay. So nitrogen detect करने के लिए the blue color formed. What is that blue color? जल्दी Prussian blue color किसकी वजह से फॉर्म किया है? हाँ, याद है ना, दो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये. यस, फेरिक फेरो साइनेट. Fe for FeCN6 thrice. So qualitative analysis is over. We'll just go through it once again. मतलब just brush up करेंगे, फिर बाद में क्वांटिटेटिव का ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला पार्ट आज डिस्कस करते हैं. बाकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हालोजन का estimation, quantitative estimation we'll study in another class. So listen from the starting. If I say, okay, so now qualitative analysis of carbon and hydrogen. Aditya Bhosle, which test? Carbon and hydrogen, which test we used? टेस्ट बोला मैंने, भूल गए इतनी जल्दी? लाइबिक्स मेथड. ओके, तो लाइबिक्स टेस्ट में हमने क्या डालते हैं उसपे ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कुप्रिक ऑक्साइड. CuO. तो अगर हमें CO2 मिला तो कार्बन है, डैश मिला तो हाइड्रोजन है. व्हाट इज डैश तन्वी? H2O. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगी विघ्नेश? लाइम वाटर टेस्ट. वाटर की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करता है दिव्या? वाटर की प्रेजेंस किसको व्हाइट से ब्लू कलर में बदल जाते हैं? कॉपर सल्फेट. यस, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं. So carbon and hydrogen revised. Now what about another nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus? We have to make sodium fusion extract. I'm not going to say it again. Hope you already understood what is that. So in this sodium fusion extract, we have to take several aliquot from this. So the first aliquot, what you do? You add
फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, बाद में क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो पहले आयरन सल्फेट डाला तो हेक्सासाइनोफेरेट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो Fe3+ में मिलेगा, दोनों को मिला के तुम्हें फेरिफेरोसाइनेट दैट प्रेशियन ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, which indicate the presence of which element नंदिनी, कौन सी एलिमेंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है प्रेशियन ब्लू कलरेशन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद हमने क्या पढ़ा, we studied sulfur. By two tests we can detect sulfur, one is lead acetate test and sodium nitroproside test. Okay, so in lead acetate test to another aliquot of sodium fusion extract, what we have to add, lead acetate. Okay, तो तुरंत वो ब्लैक कलर में बदल जाएगा, दैट इज सल्फर की फर्स्ट टेस्ट। अगर दूसरी टेस्ट लेना है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कर लो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन डाला है तो किसमें बदल जाते हैं, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड में बदल जाते हैं, दैट इज ए वायलेट कलर्ड सॉल्यूशन, दैट आल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। वेल डन, यस, नाइट्रोजन हुआ सल्फर हुआ। नाउ अगर दोनों प्रेजेंट है तो, है ना, दोनों एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम इधर, है ना, जैसे अरमान अभी कर रहा है, पलक से बात भी कर रहा है, मेरा क्लास भी सुन रहा है, इसी तरह अगर हमने दोनों चीज एक साथ करना है तो कौन कौन सा चीज, बात करना और लिखना नहीं, सोडियम एंड सल्फर, ये दोनों एक साथ करना है तो क्या करना है, FeCl3 डालो, सो ब्लड रेड कलरेशन मिलेगा, ब्लड रेड कलरेशन मिलेगा। हाँ, कब, नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। हालोजन है तो पहले क्या करना, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोजन और सल्फर रिमूव करना, फिर क्या डालना, सिल्वर नाइट्रेट डालना, सिल्वर नाइट्रेट डाला तो if there is chlorine, AgCl will be formed, which is white in color. If there is bromine, AgBr will be formed, which is pale yellow color. If there is iodine, AgI will be formed, which is a yellow green color. उसको और अभी क्या करना चाहिए, NH4OH से डिसॉल्व कर रहा है वो देखना है, क्लोरीन डिसॉल्व करते हैं, ब्रोमीन स्पायरिंगली सोलुबल, तीसरा आयोडीन इनसोलुबल। फॉस्फोरस की टेस्ट था जो लास्ट पढ़ा, उससे हम हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म कर रहा है, एंड लास्ट स्टेप क्या है, फॉस्फोरस में क्या किया, फॉस्फोरस में हमने, वी डोंट नीड टू टेक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, राइट, just take phosphorus organic compound, heat it with sodium peroxide, उसके बाद क्या डालना, अमोनियम, सॉरी नाइट्रिक एसिड डालना, थर्ड स्टेप में अमोनियम मोलिब्डेट डालना। अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाया तो उसकी वजह से येलो कलर फॉर्म करेंगे, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ phosphorus. Now you all become expert to say whether in the compound which I have given there is carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, sulfur, chlorine, bromine, iodine. इतना सब कुछ पढ़ा है। अभी चलो बस 15 मिनट्स में हम देख लेंगे क्या, व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ओनली वी आर डिस्कसिंग इनिशियली व्हाट, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट इज अ वेरी सिंपल। तो पहले देख लो, इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ, जैसे मल्टीटास्किंग मैंने बोला इसी तरह, इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ वी कैन क्वांटिटेटिवली एक्सपेरिमेंट carbon and the hydrogen. Okay, so a non-mass of an organ, what we want to detect here, quantity of carbon and the hydrogen. उसके लिए पहले क्या करना, a non-mass of an organic compound burn करना, किसमें burn करना है, in the next experiment you can see that too. Can you see a YouTube here, YouTube, yes, U shaped too, YouTube. Okay, so listen, in this particular apparatus there is CuO pellets are there, okay,
and along with that sample in platinum board is kept over here. Platinum board, platinum metal board sheet पे platinum metal दिख रहा है, उसके ऊपर क्या करना है, हमारा क्या रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखना है. ओके, नहीं तो क्या होगा, एकदम बर्न होके काला हो जाएगा. समझा, वो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, इसकी क्वांटिटी टेस्ट करना चाहिए ना. ओके, तो उसके लिए पहले क्या करना, इसको यहां से बर्न करना. ओके, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. बर्निंग कब होता है, तो प्योर ड्राई ऑक्सीजन सप्लाई करना, बिकॉज वी आर डूइंग बर्निंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम, सो ऑक्सीजन बाहर से डालना पड़ेगा. Anyway, the substance which are formed in this tube is passed through copper oxide pellets. वो यहाँ से हमारा यूट्यूब में आ जाएगा. यूट्यूब में क्या क्या है, एक यूट्यूब नंबर, यूट्यूब में शॉर्ट है, तो यूट्यूब में इधर फर्स्ट यूट्यूब में क्या है, इट इज फिल्ड विथ partially filled with anhydrous calcium chloride. सेकंड यूट्यूब में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो इमेजिन नहीं करने, विजुअलाइज कर सकते. so the uh, system consists of a horizontally kept test tube. Okay, so that test tube you are giving dry oxygen, and inside the test tube you have kept a platinum board. Above that organic compound is there. क्यों, उसका ही, उसके अंदर की कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही मास डिटेक्ट करना है, तो वो चाहिए ना पहले. यस, तो वो रखना, बर्न करना. ओके, देन जो कंपाउंड्स इधर फॉर्म करेंगे बर्निंग की वजह से, जो गैसेस रिलीज होता है, दैट इज पासिंग थ्रू कॉपर ऑक्साइड पेलेट्स एंड अल्टीमेटली मूविंग थ्रू अनहाइड्रस CaCl2, एंड जो बचा है वो सेकंड यूट्यूब से भी जाएगा. समझा, सिस्टम समझा. नाउ लेट्स कम बैक. So here in this reaction, everyone listen, only 10 minutes is remaining. Please pay attention. See here, CXHY. Why I wrote this? Because I am pretty sure that in my compound there is carbon and hydrogen. How? देखिए समझा. हाँ, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है क्या, वो मैंने कैसे पता चल जाएगा, वही तो पढ़ा है, लाइबिक्स मेथड. हाँ, वो करके मुझे समझा, हाँ इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है. अभी मेरा सवाल क्या है, कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, वो देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना है. तो उसके लिए देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, व्हाट इज ऑक्सीजन प्लस एनी कंपाउंड दिया तो उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, कंबशन ही चल रहा है ना. जस्ट अ सेकंड. So listen, this equation is a combustion reaction, and at the end product of combustion, मैंने बोला ना horizontally kept tube, उसके अंदर क्या क्या फॉर्म किया, two gases are formed, carbon dioxide and water vapor. Yes, and that is passing through two different U tubes. Okay, so देख लो, the mass of water vapor produced is determined by passing the mixture through a weighed U tube containing anhydrous calcium chloride. देखो, हाइड्रोजन वाटर वेपर कौन अब्सॉर्ब करेगा, CaCl2. Yes, CaCl2, the first U2. See, you can see this anhydrous CaCl2, the first U2 will absorb what, water vapor, and potassium hydroxide, that will be taking care of what, apart from H2O, which compound produced here, carbon dioxide. So padho, carbon dioxide is absorbed in another U tube containing concentrated solution of potassium hydroxide. तो बेसिक चीज ये है,
तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है वो देखना है। उसके लिए यू हैव टू ट्रैप दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन, यू हैव टू ट्रैप दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहले कार्बन को सॉलिड फॉर्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी गैसियस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, इसके लिए तुमने बर्न किया। तो द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड विल बी absorbed in second U2 and the H2O formed will be absorbed in first U2. Done. Okay, now क्या करना, इसकी वॉल्यूम अभी बढ़ जाएंगे ना भाई पलक, इसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा? हाँ H2O तो आया ना, अब्सॉर्ब किया ना H2O, तो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग वॉल्यूम से वो बढ़ जाएंगे। द सेम हैपेंस टू दिस आल्सो, KOH का प्रीवियस इनिशियल वॉल्यूम नहीं रहेगा बाद में, because these gas are dissolved in it. Done. Now let's see the equation. To estimate hydrogen, I only want to explain this slide. Listen. So, to estimate hydrogen, what happens? Let the mass of organic compound be m gram and the mass of water be m1 gram. वाटर का कैसे आया? बर्न किया ना अभी, तो उसमें H2O बनाया ना, उसका मास है m1। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस पे रखा है? प्लैटिनम बोर्ड में रखा है, उसका मास है क्या? m। okay, so if 18 grams of H2O, that is 1 mole of H2O में कितना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है? 2 grams of hydrogen है। तो we want to calculate how much H2O is produced, तो उससे तुम्हें मिलेगा ना कितना हाइड्रोजन है। टारगेट क्या है? टू एस्टिमेट हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को सीधे जाके एस्टिमेट नहीं कर सकते, तुम वाटर को एस्टिमेट करो, इनडायरेक्टली मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजन की। तो वाटर की एस्टिमेशन करने के लिए इक्वेशन ये है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस 2। ये 2 कैसे आया होगा? 2 18 1 मोल में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, वो 2 है ना ये। 2 into m1, what is m1? mass of H2O produced। कैसे फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ? मैं बोला ना वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा, जब CaCl2 में वो अब्सॉर्ब किया तो कितना H2O आया है वो तुम्हें आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, उससे उसका m1 मिलेगा। सो 2 into m1 into परसेंटेज निकालना है तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करता है? 100 डिवाइडेड बाय 18। कैन एनीबॉडी से why 18 हियर, why it is not 16? यस, हमने हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए H2O को डिपेंड किया। सो H2O की मोलार मास है 18, सो डिनोमिनेटर में क्या होता है? H2O की मोलार मास 18 into m। व्हाट इज m? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टूड? ऊपर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स, 2 कैसे आया? 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन्स, ओके, सो 2 into m1 mass of water formed in that horizontal tube, absorbed in that U-tube 1, very good, into 100 divided by molar mass of water 18 into mass of organic compound। everyone note down this equation because next class में इसका problem we have to do। ये इक्वेशन नोट डाउन करो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का इक्वेशन, जल्दी। हो गया? इसके नीचे का इक्वेशन है जो हमें पढ़ना है वो ये है, परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना? सेम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो कार्बन की एटॉमिक मास कितना है? कार्बन 12, ओके। कुछ देर पहले हाइड्रोजन का 2 बोला ना मैंने, इधर क्या आया? 12 आया, इंटू m2, व्हाट वुड बी m2? मास ऑफ CO2, वेरी गुड, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 क्यों आया इधर?
कार्बन फाइंड आउट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मोलार मास इनटू m, व्हाट इज m, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो, ये लिखा। तो अंडरस्टूड कैसे क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट। सो एक बार ये कार्बन और हाइड्रोजन का बोल के जाओ। कार्बन की फाइंड आउट करने, हाइड्रोजन की फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना, फर्स्ट यूट्यूब में जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड रखा है उसमें अब्सॉर्ब करेंगे ना वाटर, तो वॉल्यूम डिफरेंस आ जाएंगे, उसमें से हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी मास ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इट। So to find out the final percentage of hydrogen present in the organic compound, the equation we use is 2 into m1, the mass of water, into 100 divided by water की molar mass कितना है 18 into organic compound की mass, means molar mass नहीं, weight जितना में दे रहा है वो उसका weight करके रखना पहले से। हाँ। फिर इसी तरह सेकंड यूट्यूब में अब्सॉर्ब होगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी हमें वॉल्यूम चेंज से उसका मास मेजर कर सकते हैं। उसमें इक्वेशन कैसे बदल जाते हैं, 12 into percentage of carbon is equal to 12 into m2, m2 is indicating the mass of carbon dioxide into 100 divided by 44, the molar mass of carbon dioxide into weight of organic compound. Well done. So we studied all the qualitative analysis and two quantitative methods. See you in the next session. Thank you.